और क्या बात है, और पैरामीटर्स, अभी पैरामीटर्स पे जी, आई थिंक इतना so हमने we talked about the physical frustration. तो Physical एक कैटेगरी में हम लोग इतने सारी चीजें कुछ समझ गए. हम्म So दूसरी चीज होती है, हमारे पास बहुत सारे fears हैं. Zishan bhai, if I ask you to list down 5 fears which you feel you have, see, that's again your feeling. I meet people that are, Imran, I fear people. I'm very fearful about what will people say no to me. So हम लोग है ना handwriting के एतबार से 5 concrete fears को identify करते हैं. ओके Fear of being ridiculed, okay, fear of disapproval, and all these things is important for you to understand. Many times we feel fear of being ridiculed. Simple है, आपको fear है कि कोई आपको ना कर देगा, इतना ही आपका फियर है. बट ये छोटा फियर इतना बड़ा हो जाता है ना, यू पिक अप योर फोन इवन बिफोर यू डायल द नंबर. आप फोन डायल करने से पहले आप डिसाइड कर, यार ये नहीं बोलेगा, छोड़ रहे नहीं, हाँ ये नहीं देगा. लाइक हाउ मेनी ऑफ यू, लाइक यू पिक अप योर फोन, आई वोंट टेल माय बॉस आई विल टेक 5 days off or 2 days off, लाइक यार नहीं, छोड़, नहीं करना, नहीं सुनने मिला, क्यों कर रहा हूं. So can you see that it's a fear of ridicule, and that's the smallest thing which you need to work on, but it is the biggest thing which you need to really work on because it's stopping you from doing something. And one look at your handwriting, I can exactly tell you what is stopping you. Can you explain कुछ एक context जैसा, तो क्या होता है, कोई एक चीज? I love to tell you the letters. Okay, when I talk about physical frustration, I look at the lower zone letters, like the Y's, the G's, the Z's, how you're written. Okay. When I'm looking at fear of being ridiculed, I look at the way you're writing your M's. So just to clarify, I could show you right now saying that, okay, if you write your M like this, you're like that. If you write your Y like this, you're like that. But Zishan bhai, it will become like a mass the following. And you will keep looking for this M or this Y in everybody's handwriting. But Zishan bhai, you know what? Sir? Your handwriting is as unique as your fingerprints. Like nobody writes the way you write. Nobody signs the way you sign. So if you're going to search for this Y everywhere in your own handwriting, you will not find, because I need to tell you what exactly look at, because मेरे लिए वो letter नहीं है, मेरे लिए वो simple stroke है which is combination of lines. So if I show you exactly, that's what I do in my program, and some of you should really click on the link below in the description where I have shown you some of the things which you need to do about your signature, and have given you multiple interpretations that even the smallest dot in your signature, the underline, matters a lot. So below this video there's a description, go click on that. I'll share that. Yeah, please. So I'll tell you how everything matters. So letter specific, for me every letter has a meaning to it. Like if you give me your handwriting, even if it's just a one line or a signature, I can actually identify all these things. So fears are something which you need to really work on. And interesting thing I want to tell you, fear आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि आपने वो fear को बचाने के लिए इतने सारे डिफेंस मैकेनिज्म खड़ा कर लिया, इतने सारे डिफेंस मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, आपको फियर है कि कोई ना बोल देगा, ये आपका फियर है. इसको बचाने के लिए आपने डिफेंस मैकेनिज्म्स को बढ़ाए. कैसे? यू मेड द अपॉर्चुनिटीज रॉन्ग. कोई भी चीज अच्छी नजर आती थी या कोई भी अपॉर्चुनिटी नजर आती, लाइक यार हमारे ये नहीं है, बिकॉज आपको लगता था कि यार मैं करूंगा ना मिल जाएगा, मैं अप्रोच करूंगा ना मिल, तो यू स्टार्टेड मेकिंग पीपल अराउंड यू रॉन्ग. Nobody supports you. You know, you're alone in this world. You have to do everything on your own. So can you see that you start building this invisible wall and you make yourself as a victim by doing all this thing. So when you meet me, Zishan bhai, more than your fears, I'm more concerned about the defense mechanism. जो आपने create कर लिया. क्यों आप इतना गुस्सा करते हैं? It's a defense mechanism. Why you're actually finding faults with everything on the planet Earth? Because that's your defense mechanism. So what is that? What the question you should ask is that, what is that fear which you're safeguarding? Why you do what you're doing? You think you have an anger problem. You think that you're emotionally very disturbed person. You think you have high emotions and low emotions. Like, no, that's all your defense mechanism. Find out what is the fear which you're actually covering. You have an answer for that? कैसे find out करता हो? Through your handwriting. With your handwriting. कोई एक example दे सकता है? Okay. So for fear, maybe for physical. आपने जो बताया, पहला फिजिकल था, सेकंड क्या था? So fear of ridicule. हाँ. So कोई भी एक एग्जांपल बता सकता है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है? What's the logic behind it? So for example, see how your fingers move. So let me tell you how handwriting actually shows me all these things. So let's go back to the basics. I'm sure you're sitting there and thinking, Imran, all conversation is good, but how is the question? Like how is that the letters you're taking, talking so much about me? Right. इतने सारी चीजें कैसे मालूम हो रही हैं? So चलिए थोड़ा बेसिक्स में बात करते हैं. So your handwriting is not your handwriting. It is actually the brain which is actually writing. Okay. So आपको लगता है कि आपकी handwriting बुरी है, because the first question everybody has like, मेरी बुरी handwriting है,
my handwriting is not consistent, I write differently every time. हाँ All is very natural and all this is happening to you. Congratulations, you're normal, okay? हाँ हाँ अगर ये नहीं हो रही तो मैं आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. हाँ So what you mean by that is simple. Your handwriting is not your handwriting. You think it is the hand which is writing. You think the pen differs. You know, you think अगर ये पेन से लिखूंगा अच्छा लिखूंगा. ये सब आपके समझ के एतबार से हैं. लेकिन हमारे लिए it's coming from the brain. If hands were to write, how would people who write with their mouth? How would people who write with their toes? Have you not seen people using different parts? So that means to say the blueprint is here. And hand is just a medium. Now the question is that now why is it called handwriting? Why not brain writing? Because majority of the population on the planet Earth uses hand as a medium to write. तो इसलिए उसको हैंड राइटिंग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ब्रेन राइटिंग होती है. तो अगर मैं आपके लेटर्स को देख रहा हूँ, आपको लगता होगा कि मैं देख रहा हूँ ये कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है, कितनी बुरी हैंड राइटिंग है. नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं. इनफैक्ट मेरे लिए ये मायने भी नहीं रखता कि वो यस है या ओ है या ई है. मेरे को ये मालूम करता है कि आपने शुरू कैसे किया, उसको कहाँ से लेके जाकर उसको कहाँ से आपने खत्म किया. बिकॉज द वे इट मूव्स अराउंड ऑन द पेपर इट मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट योर लेटर टी. लेटर टी में दो चीज़ें होती हैं. एक होती है स्टैंडिंग लाइन और एक होती है क्रॉस बार. और अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में खुद अभी देखें, ये टी है ना, कभी भी आपने कंसिस्टेंटली नहीं लिखा होगा. कभी आपका टी थोड़ा नीचे गया होगा, द क्रॉस बार, या कभी ऊपर होगा, कभी राइट साइड में होगा, कभी लेफ्ट में. सो कैन यू सी दैट आपकी हैंड राइटिंग में सबसे बड़ी चीज़ आपको ये मालूम करनी है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है. एंड आपको ये प्राउड से आप ये बोलते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग हमेशा चेंज होती रहती है ना, तो कौन सी हैंड राइटिंग में आपको दिखाऊं, बिकॉज चेंज हो रही है, यही प्रॉब्लम है. बिकॉज यू आर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट विथ योर एनर्जी एंड बिहेवियर. Why is Zishan is not so excited every time and every moment? Why is he not so motivated? Because it's like a wave, right? He's excited and the next day he wakes up and says, मुझे आज ये करना है, हाँ right? And tomorrow is like, यार आज जो बन चल गई रहा है वो उसकी. ठीक है, right? So can you see that we're not consistent? We're not, forget about anything else. You're not consistent with your energy. You're not consistent with your behavior. And children are the easiest people to come and tell you whether your behavior is not consistent, because उनको मालूम है आज माहौल खराब है, आज पूछने से ना मिलेगा, हाँ तो आज ये नहीं. Can you see that they see the pattern in you? पैटर्न्स हाँ. And our spouse, our people around us know that. So the first thing you need to do is you need to learn handwriting analysis to stabilize this consistency in your behavior and energy. And if you can figure this out with this podcast, I think the value given already. So that's the idea. And when I look at your letters. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.